Stories are not just told, they are felt. Some make us laugh, some make us cry. But the ones that linger, they change us forever. Our next speaker is a filmmaker who weaves emotions into powerful narratives, giving us stories that touch the heart and stay long after the credits roll. Before we call on stage, let's watch her journey unfold. May we have the AV, please? Speaker identified. Lakshmi R. Iyer. Codename, the Story Sculptor. Signature powers. Can turn silence into emotion, emotion into stories, and stories into timeless cinema. She can juggle roles, filmmaker, TEDx speaker, YouTuber with the flair of someone born to tell stories. Current assignment, leading Street Smart Productions and crafting films like First, Second Chance, and the festival favorite Aloo Bhujia. Ripple effect. You may leave the hall teary-eyed or smiling at memories you didn't know you missed. Please welcome the dreamer, the director, the agent of heartfelt frames, Lakshmi R. Iyer. Wasn't that beautiful? Put your hands together and welcome the visionary filmmaker, Miss Lakshmi R. Iyer. Confess something, Lakshmi ji. The moment. I'm young, yaar. I'm 16. Don't call me Ji. All right, Lakshmi. Yeah. The moment I found you were coming to Indore, I binge watched most of your short movies, and guys, you must watch it. Appa, Wrong Mistake, Seasoned with Love, First, Second Chance, each one left me moved in a different way. What I love is that your stories are emotional but never melodramatic, meaningful and so relatable. It felt like a crash course in cinema, right from my living room. Thank you so much. Thank you. Thank you. So before we move on into the conversation, IMA would like to honor Lakshmi in a special way. As a token of appreciation, a skill development training in sewing has been provided to a young girl, empowering her to stitch together her own future. Just as Lakshmi ji weaves stories on screen, this initiative will help a young woman weave her independence thread by thread. May we now have the video, please? रीनू रावत। मैं लक्ष्मी अय्यर मैम का धन्यवाद देना चाहूँगी जो IMA वुमेन कॉन्क्लेव में आए हुए हैं। उन्होंने FPS युवा के माध्यम से हमें सिलाई प्रशिक्षण में सहायता की है। मैं आगे चलकर ये प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना बुटीक खोलना चाहूँगी। So sweet. I'm so happy to see this. Thank you so much. Thank you. May I now request Reenu Rawat, owner of Reflections Art Gallery, to kindly present the appreciation letter to Lakshmi. And now to take us deeper into her world of storytelling, which I'm so excited to hear, I invite our moderator, Miss Pooja Sharma. Over to you. So Lakshmi, film sets पर आप कहती होंगी action, आज यहाँ हम कह रहे हैं conversation. So guys, let's roll with Lakshmi R. Iyer. So Lakshmi,
पहले तो ये बताइए, how is your IMA experience coming to Indore? So, you know, Anything this is my particular? first visit to the city, and I have to tell you, I really love exploring. It's such a clean city. I'm so happy to see the city in general, and I've made some really good friends here. And when I look here, I'm sure each one of the women who's sitting right opposite to me has a dream, has a vision, has hard work, has a journey, and that's why they're here. Celebrating women with women, there's nothing like that. It's fantastic. Yeah, thank you so much. So my first question is, there are films that we like, we admire, and then there are films that change something completely within us, permanently. So what's that film for you? So, you know, a lot of films are very important in my life because sometimes films, you watch them, you forget them as soon as you reach home, right? But sometimes a film stays inside you, becomes a part of you, not just for that day, for years. You believe you're that person. जो हीरोइन आप देखते हैं स्क्रीन पे कभी-कभी आपको लगता है ये तो मैं ही हूँ ना, ये मेरी ही कहानी है ना, मतलब इतनी सारी कैरेक्टर्स होती हैं. So one of my favorite films is a Tamil film called Monaragam. Wow. If you've not seen it, please watch it. There is a famous Revati ma'am is there in the film. It's a quite an old film, 1986 में बनाई गई थी film. It was about a woman who's asked to do arranged marriage, and she is not comfortable with the idea, and she becomes a little rebel with the family. And to have that thought in 1986 for a director like Mani Ratnam to show a woman who's not shown as a villain, she's positive, she's confused, she's not sure कि शादी करनी है, नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है, ये सोच भी उस वक्त के लिए बहुत ही मेरे लिए स्पेशल थी. और शायद मैं उस तरह की लड़की हूँ जो ड्रीम्स आज भी देखती है और हर बार कोशिश करती हूँ कि जो सोचती हूँ वो अचीव करूँ. एंड आई थिंक द ड्रीमर साइड ऑफ यू which is complex, sometimes we make mistakes, we're not perfect, right? हम सब गलतियाँ करते हैं, हम सबको लगता है कि हमने ये हो जाएगा, हम फेल हो जाते हैं. But still that process of, you know, being that imperfect person trying to find that calling is that film. And the music, the direction, it's not perfect love story जिसमें फूल गिर रहे हैं, हीरोइन डांस कर रही है साड़ी पहन के, ऐसा नहीं हो रहा है. उस फिल्म में एक लड़की का साइलेंस है. So I understood silence. The words sometimes are not powerful. The pauses in the conversation are so powerful. कभी आपको कोई बोला चुप तो आप, this is more powerful. So that film taught me कि filmmaking is not just about dialogue. Sometimes the in between, what happens between the lines, it is what it is, and that's the best part about that film. Okay, so nice. You have built this from scratch. No Godfather, but real passion and love for cinema. So what's the most challenging part? So industry में तो Godfather नहीं है, but Father God जैसे हैं मेरे, जिन्होंने मुझे सिखाया है. तो उन्होंने मुझे सिखाया है कि जिंदगी में मेरी बेटी हमेशा खुश रहेगी. और इस थ्योरी पे मैं चलती हूँ कि लाइफ में जो भी करूँ, आई एम हैप्पी, दैट इज़ द प्रायोरिटी. उस मंत्रा से जीती हूँ. और रही बात फिल्म इंडस्ट्री की, तो कोई भी चीज़ ज़िंदगी में आसानी से मिल जाए तो उसका मज़ा नहीं है दोस्तों. जो मज़ा हार्डवर्क में, जर्नी में स्टेप बाय स्टेप होगा. फॉर एग्जाम्पल कोई स्टार किड है या कोई और है, एवरीबडीज जर्नी इज़ डिफरेंट. किसी को 0 से चलना पड़ता है, किसी को 10 से, किसी को 20 से. पर आपकी जर्नी अलोन, यू डोंट जस्ट हैव टू गो ऑन, उसमें मज़ा है. यू नो, उस जर्नी में बात है. तो उस विश्वास को डोंट कंपेयर विद अदर पीपल. ओके, दिस वन इज गेटिंग वेरी अर्ली, मुझे भी 1 साल में ये उखाड़ देना, ये दिखा देना, वो शान, ऐसा नहीं होता है. आपका ड्रीम जितना प्योर रहेगा, वो जर्नी उतनी अच्छी रहेगी. और मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ें आसानी से नहीं होती हैं. और हर एक लड़की या लड़के में वो परसिस्टेंस होना चाहिए कि नो गॉडफादर क्यों चाहिए. आपके सपने में इतनी ताकत है. यू नो, वो फिल्म DDLJ में कहा गया कि सपने देखो, उनको पूरा होने की, यू नो सपने देखो और उनके पूरा करने की हिम्मत और मेहनत रखो. So I believe in that theory, and I think that's what worked for me. But you must have, as a woman director, must have had tough days. Any particular challenges you faced? So यार, tell I'm us very something off this about word. it. Women director, मैं director हूँ यार. Women तो मैं हूँ, मैं director हूँ, ठीक है? Exactly. तो ये सब नहीं मैं मानती हूँ. I don't take the privilege of being a woman. I think ability is what defines you, not your gender. So I believe मैं लक्ष्मी director हूँ, मैं लक्ष्मी women director नहीं हूँ. और मेरा काम, मैं जितना एक मर्द काम कर सकता है, उससे ज़्यादा एनर्जी मेरे में है काम ऑन सेट. सो ऐसा, और अगर आप अपना काम अच्छा करते हैं तो मैं आपको ये लिख के देती हूँ, हर एक शख्स, चाहे वो औरत हो या मर्द, he'll give you equal amount of respect. Your work gives you respect. So don't use gender card ever, because वो लंबा नहीं चलता है ना? That is really inspiring. And
because we're talking of inspiration, so let's have a look at her incredible journey. So I request the AV team to play the special video we have prepared for Lakshmi. I used to be like you, always angry. मैं क्या चाहता हूँ कोई मुझसे पूछता ही नहीं है। आज फिर छूना है हमको। मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि पप्पा ने मेरी रिक्वेस्ट सुन ली। मेरे एनजीओ ने मुझे बताया 4 साल वेट करने के बाद मेरी आंखों का मैचिंग मिला है। Person is very original, so I don't copy anything in my life. So anything that I write or create has to be from my mind. So I think, I observe, I listen to stories of people. I'm very inquisitive, so I talk to a lot of people. I find stories and I make the movies. I did well in school. I topped in my school, and then I did my college also. I was made to study for CA also. But I was very, very, adamant in my mind that if I study CA, and I finish, then I'll be bound to work because I'll start making money and I'll get stuck in this profession. Before you start, Pooja, I do a lot of hairstyles. I've tried all haircuts, okay? I'm into fashion also. I love it like all of you. Wow. But by watching this journey of yours, ऐसा लगता है कि आज की हीरोइन सिर्फ प्यार में नहीं पड़ती बल्कि पावर में भी पड़ गई है. So, what do you feel about the women characters being played today in Hindi cinema, Bollywood? यार I think अभी भी क्या होता है ना, जो हीरोइन होती है, अच्छी लड़की होती है, उसके बाल सीधे होते हैं, वो गोरी होती है, वो सलवार कमीज या साड़ी पहनती है, वो टाइम पे घर आ जाती है, वो सिगरेट हाथ में नहीं रखती है. जैसे वो वैम्प बन जाती है, उसका आई शैडो डार्क हो जाता है, उसके बाल छोटे नहीं होते हैं, है ना? और फिर उसको मतलब एक तरीके से बात करती है, वो डिवोर्स भी हो सकती है, वो परफेक्ट वुमन नहीं है. सो आई स्टिल फील अ लॉट ऑफ इट इज men don't have it. You see the villains in the film, you never see a villain with a cigarette to say it's a villain of late. But आज भी जब हम कोई नेगेटिव कैरेक्टर देखते हैं औरतों का, I don't know why it's so cliche कि औरत को एक सिगरेट पे करना जरूरी है क्योंकि वो नेगेटिव है. If a man can smoke, a woman can smoke, it doesn't make them negative, ना? So let's not put that as your character. So I think अभी भी फिल्में क्योंकि like Ishita mentioned कि बहुत सारी women directors हैं, writers हैं. No, even men writers also write well. जो भी इमोशन समझता है, जिसको भी समझ आता है कि इमोशन क्या होता है, बिकॉज बहुत राइटर्स की बहन, मदर्स, दे ऑब्जर्व द सर्कल अराउंड देम एंड दैट्स हाउ दे गेट इंस्पिरेशन. एंड फॉर एग्जाम्पल मी, आई ऑब्जर्व पीपल अराउंड मी. आज मैं यहाँ कुछ 4 दोस्त बनाए, उनको कुछ देखूंगी, उनसे कुछ इंस्पायर होकर कुछ एक कुछ चीज़ अच्छी लगती है, और दिस इज इंटरेस्टिंग, आई पुट इट इन माई स्टोरी. क्योंकि किरदार क्या होते हैं जो आप देखते हैं, एंड आई बिलीव जितना रियल और जितना सच्चे और प्योर आप सिनेमा से होते हैं ना, उतना कनेक्ट ऑडियंस के साथ होता है. और वो मैंने अपनी जर्नी में एक्सेप्टेंस पाया है ऑडियंस का. तो आई फील आज भी वो लाइक, आई थिंक वन ऑफ द नाइस फिल्म्स आई लाइक्ड वाज क्वीन, वेयर शी वाज जस्ट डूइंग व्हाट शी वांटेड टू डू एंड इट वाज ब्रिलियंट. बट वो गिने चुने मुझे नहीं चाहिए. मुझे लगता है कि इन अ फिल्म दैट कैरेक्टर्स, एवरी एक्टर इज प्लेइंग अ कैरेक्टर. सो ये हीरो हीरोइन थ्योरी से बाहर निकलकर पीपल कैन बी फ्लॉड एंड देयर इज नो नेगेटिव पॉजिटिव फॉर मी. आई थिंक complex, imperfect people are my kind of actors, or the characters. Nice. Tell us about what's keeping you busy right now, your upcoming You are keeping me busy right now. But your short film, The Pact, it's already creating so much buzz. Yeah. So I've just finished wrapping a film last week. 4 दिन पहले मैंने एक film खत्म की है. It's a story on a father and son. It has the superstar from Bengal, Paramrat Chatterjee.
written by Apurva Asrani. He's a very famous writer who's written Made in Heaven, Aligarh, Hansal Mehta की काफ़ी फिल्में लिखी हैं उन्होंने. And he's written a beautiful film on a father and son. Again, my characters are flawed. You know, कोई perfect नहीं है मेरी फिल्मों में. ना पापा, ना बेटा, ना कोई भी. Because हम real life में perfect हैं क्या? कौन perfect है? कोई भी नहीं. तो बहुत ही प्यारी और दिल से बनाई हुई कहानी है. शूटिंग हो चुकी है. उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है. As for the next journey, I'm trying to step up and become a feature filmmaker. My first film I'm working on. It's a courtroom drama that I'm thinking of or a love story. उस पे अभी काम चालू है तो मतलब चल रहा है. So that's all I can share right now. Wishing you all the best Thank you for so that. But in today's scenario with OTT and digital streaming, the content has to be riveting enough because the audience always has a mobile in hand, even while they're watching a movie. So for you, what comes first? The message you want to give or the entertainment value of the story? Yeah, see, both of them are in sync. एक दिल है, एक दिमाग है, एक body है. It's like that. You can't message भी आप सोच के नहीं बनाते ना film. When you make a film, आप एक कहानी सुना रहे हो. I'm not trying to give you ज्ञान की life में एक ओशो की तरह भाषण दूंगी. मैं entertain करने के लिए film बना रही हूँ. You know, I'm trying to tell a story. So कहानी को purity से बताएंगे. A sync between the message and the entertainment value because end of the day, people watch films to just break free from their mundane life, right? That's the whole point. And actually the attention span of the audience has gone so down in the last few years कि हर content का अलग audience है. आप रील देखने वाला, अब मैं पूछूंगी आपने पिछले हफ्ते कौन सी रील देखी तो आप में से किसी को याद नहीं होगा. आपने 400 रील देख ली होंगी, right? हर कोई खाना बनाना चाहता है, हर कोई मेकअप करना चाहता है, पर कुछ याद नहीं है. So sometimes you watch content like short films which have memory. मुझे 10 साल बाद भी लोग आके बोलते हैं आपकी वो फिल्म देखी बहुत अच्छी लगी. तो कुछ तो मेमोरी वैल्यू है उस फिल्म की. फीचर फिल्म्स आज भी मुझे लगता है कि बड़े पर्दे में मज़ा आता है. OTT फिल्म्स का कॉन्सेप्ट मुझे अभी भी मेरे दिमाग में तो नहीं घुसा है. फिल्म्स बिग स्क्रीन का जो एक ऑरा मज़ा होता है देखने का वो फिल्म्स का ही होता है. सो आई फील द ऑडियंस इज चेंजिंग. द मोबाइल इज फॉर द रील्स और द शॉर्ट कॉन्टेंट. For the big format, 2.5 years, you still go to the cinema theater. So that's my thinking. And any particular advice you would like to give the young girls who are planning to enter this field? Yeah, all the young girls out here, I'll give you advice. Because आपके हिसाब से उन्हें सबसे पहले किस skill या किस mindset पे काम करना चाहिए? See, what I believe personally is that don't wait for your turn. This industry is not going to give you an invite, okay? Don't go and crash the party. Don't wait for anyone to tell अब हो जाए. कोई नहीं हेल्प करेगा, कोई किसी के लिए नहीं काम करता है. तुम्हारे अंदर जो है ना, हमारी फैमिली भी एक पॉइंट तक काम कर सकती है. इट इज़ यू. सो आई हैव 2 tattoos in my hand. One says continue, one says till I rise. No matter what happens, we all go through phases, depressions, problems, सब कुछ. लेकिन आपकी जो वो भाग है ना, वो दौड़, लगे रहो. लगे रहोगे तो पालोगे जिंदगी में. That's really insightful. ऐसी चीजें हैं जो normally कोई बताता नहीं है, पर we wish that we had known this earlier at the start of our careers. So again, we'll do a quick rapid fire with Kritika and me, taking one question There's a hamper, each. coffee hamper. We will surely be giving you a hamper. Coffee I love, so please give me a coffee hamper. Or a Sarafa trip. Okay. Which show are you watching nowadays? Yeah, honestly, because I was working on a film, I haven't seen anything. I just saw a film called Loka in theater last week, and it was a first female superhero film, and I liked it. It's releasing on Netflix, I think, in the coming days. It was a good film. Yeah. Which snack is your shoot day companion? What do you eat? Aloo bhujia, I have to say it. If not films, then what career would you be in? Only films. जियोंगी फिल्म्स बना के, मरूंगी फिल्म बना के, लेगेसी छोड़ के आऊंगी फिल्मों के साथ, और कुछ नहीं. Which social issues you'd like to incorporate in your next project? So in my films, I show women very progressive. There's a woman like Renuka Shahane thinking of getting remarried at the age of 60. तो जो सपने हम सोचते हैं ना, उस सोच को मैं विजन देना चाहती हूँ through a visual, because visual ज़्यादा याद रहते हैं ना पढ़ने से ज़्यादा. तो वैसा किरदार जो कि मैं खुद भी ऐसी हूँ, तो जैसा मैं सोचती हूँ मैं वैसा बोलती हूँ. And so how high is your filmy meter? बहुत हाई है यार, वहाँ हाइट ही नहीं है इसकी. Anything कुछ फिल्मी किया हो लाइफ में? I'm very filmy, so the way I talk, the way I behave, I'm very filmy. I'm Basanti also, I'm Geet also, I'm all of that. And which actor would you cast instantly, even without a script? One actor I really want to work with is, I love Sridevi ma'am. She's no more, but I was a very big fan of Sridevi ma'am. I think
that Ranbir Kapoor is somebody I really like because Ranbir has got something about him in his eyes and his personality. I think he's such a non-social media actor also. उनकी performance में ही सब कुछ होता है और वो बहुत ही interesting actor हैं. तो with Ranbir Kapoor definitely. Oh, nice. So Lakshmi, thank you for proving to us कि कहानी छोटी हो या बड़ी, दिल को छू जाए तो वही blockbuster है. Thank you so much. It was lovely to be here, and thank you to all of you for being here, and thank you for inspiring us and sharing the stage. It's been fantastic. Thank you. Thank you, Lakshmi ji. Thank you for sharing your journey with us. Sorry. Your films remind us that storytelling is not just about entertainment, it's about healing, reflection, and connection. Do you want to weave a story of what you saw in Indore in the past 2 days? And I found a lot of peace in the city, although I'm very chit-chat, chatterbox. But deep inside, when I make films, my films have a lot of therav, have calmness. This city has it. And, so that side, I observe. So sometimes I don't even know what I'm observing because there's a person next to me. It just sinks in your personality. So there's probably I met some girls here right in front of me, and I see some quality in all of them. So character जो होता है ना, ऐसे ही किरदार कहानी लिखते हैं, फिर किरदार तो आपको मिल जाते हैं. तो हैं किरदार बहुत सारे, तो देखेंगे और भी. I'm sure you're going to be a very good feature film director. वो पता है. On behalf of IMA, we are deeply grateful for the time, insights, and inspiration you've given us. We also take this moment to thank our session sponsors again, Pratap Snacks Limited, Yellow Diamond, and our logistics partners, Soumya Vehicle, Prince Hyundai, and Shyam Honda for their generous support in making this possible. To the creator who makes us believe in second chances, Miss Lakshmi R. Iyer. I would now call Miss Seema Arora to take the next session. Thank you for being a lovely and engaging audience. Thank you.